ओके एथर स्क्रीन ठीक ठाक है गुड मॉर्निंग प्रणाम ठीक है एथर स्क्रीन ठीक ठाक है कि जेमती आसिया कथा फुल स्क्वायर कहतिलो कमेंट करो फटाफट कमेंट करो है ठीक ठाक यस सर वॉइस क्लियर हो तो वॉइस क्लियर हो तो ओके 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 ठीक है फटाफट लाइक करने वीडियो को लाइक करने आज हम प्रोज सेक्शन रो जहां इंपोर्टेंट क्वेश्चन से एमसीक्यू थिला डिस्कशन करिवा फटाफट वीडियो को लाइक कर दिया गुड मॉर्निंग सर अगेन सर यस सर ठीक है वेरी गुड 22 पिला जॉइन करते बट लाइक मात्र फटाफट लाइक कर तमरो किछि कहि रखियो प्रोज सेक्शन रे तमरो अछि ऑन एग्जामिनेशन राधन ता सहित दी पोर्ट्रेट ऑफ लेडी अछि ता सहित दी मैजिक ऑफ टीम वर्क अछि आ गोटे पॉल्यूशन चैप्टर आड हितने सेटा तो पिला माने आमे आजिर वीडियो रे ऑन एग्जामिनेशन द पोर्ट्रेट ऑफ लेडी ता सहित लास्ट चैप्टर जोटा दी मैजिक ऑफ टीम वर्क सेतकर क्वेश्चन आंसर करबा क्वेश्चन आंसर कहबा गले तार किछि एमसीक्यू क्वेश्चन आछि बहिरु ता ऊपर हम डिस्कशन करबा ओके परवर्ती पर्याय जे पॉल्यूशन रो जेमति स्पेशल हमें जो भारत भवन तीर्थयात्रा जेमति लिखा दिया हितला सेही भली तुमको दिया जिवो ता ऊपर मध्ये क्लास करा जिवो काली तमरा पोएट्री सेक्शन करा जिवो परदिन ग्रामर सेक्शन करा जिवो जो माने राइटिंग स्किल रे टिके वीक अछ राइटिंग स्किल कहले कोन बुझो साधारणतः पाई चार्ट ही परिबो बटल चार्ट ही परिबो बार ग्राफ ही परिबो टेबल ही परिबो टेकिंग ही परिबो नोट टेकिंग ही परिबो रिपोर्ट ही परिबो जो माने सितर वीक अछ सेति पय कोनोसी व्यस्त होबार नै तमे जदि चाहिबो ता ऊपर मध्ये आमे गुटी क्लास करि पारिबा चाहिबो जदि दरकार ताहले फटाफट वीडियो को लाइक करो चैनल को सब्सक्राइब करो पले आ गोटे कथा आजिरो वीडियोटी जेमती से सब पिला का पाखरे पहुंचीबा दरकार ए काम मु तम ऊपर छाडिली क्लास सरीबा पूर्व मु देखिबी जेमती आज मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जॉइन करथिबे तो फटाफट वीडियो टी के तम संग माना पाखु शेयर करो ओके तमे माने जदि शेयर करिवो आजिरो मु तुमको डिक्लेरेशन करूची तमे माने जदि शेयर करिवो सेही अनुसार मु तुम मानकु पाई चार्ट बुझिलो ता सहित रिपोर्ट पर बटल चार्ट जेतक राइटिंग स्किल न रहिला सबु जाक आ स्टोरी सेक्शन केबे हो स्टोरी सेक्शन कोइ पोएट्री पोएम जेतक भी रहिला सबु जाक आमे डिस्कशन करिबा ऑनलाइन मु क्वेश्चन से आनिबी डिस्कशन करिबी तार आंसर केमिति होबो पूरा इजी वे रे हम करिबा ओके तो फटाफट टिके समस्ते शेयर करो बहुत शेयर करो कारण तुम मानकर कॉलेज ट्यूशन बहुत सारा अछंती बट तुम माने शेयर करू न ओके स्क्रीन क्लियर देखाउछ तो बटल चैट कोन सर बटल चैट कहिबी सेहि पे तो कहिबी किछि पिला अछंती जानि नथिए बटल चैट कोन पैराग्राफ कोन जानि नथिबे सब कुहा जिवो टेबल केमिति करिवो सब कुहा जिवो व्यस्त होबार ओके स्क्रीन क्लियर देखाउछि क्लियर कमेंट कर दे क्लास स्टार्ट करो ऑलरेडी 15 मिनट में लेट ही गले फटाफट कमेंट कर दियो स्क्रीन क्लियर देखाउछि जो माने भी अच्छो यस यस वेरी थैंक यू तो तोर फर्स्ट क्वेश्चन थिला the author of the on examination is on examination विषय ऑथर किए जेसी वेल्स जवाहरलाल नेहरू विस्टन एस चर्चिल नॉन ऑफ द अबव on examination रो लेखक की ओके ओके सी 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 वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड ठीक अछि जो माने विंस्टन एस चर्चिल कमेंट करछ से माने का आंसर ठीक अछि ओके तो ऑन एग्जामिनेशन चैप्टर रो लेखक होचंती विंस्टन चर्चिल ओके नेक्स्ट क्वेश्चन
Churchill was born in 1873, 1874, 1875, 1876. केबे विंस्टन चर्चिल जन्म ग्रहण करथिले? केबे जन्म ग्रहण करथिले? नंबर 2 केबे जन्म ग्रहण करथिले? 1873, 74, 75, 76. B sir, B. Very good, very good. B. ठीक अछि, ठीक अछि, ठीक अछि, ठीक अछि. ओके, वेरी गुड. जो माने 1874 पहुंच से माने आंसर करेक्ट अछि. चर्चिल वाज बोर्न इन 1874. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन दिला. द पब्लिक स्कूल वेयर ही टुक एडमिशन, जो पब्लिक स्कूल रे चर्चिल एडमिशन करथिले, सेटर ना कोन थिला? दिल्ली पब्लिक स्कूल, ऑक्सफोर्ड इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल, कैम्ब्रिज स्कूल, हैरो पब्लिक स्कूल. तार ना कोन थिला? दिल्ली पब्लिक स्कूल, ऑक्सफोर्ड इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल, कैम्ब्रिज स्कूल, हैरो पब्लिक स्कूल. सर शॉर्ट टाइप रो सिलेक्टिव दियंतु. शॉर्ट टाइप रो सिलेक्टिव कोन ले? बेटा चैप्टर वाइज तो हम डिस्कशन करछि. ओडिया तो जहां डिस्कशन करछि सही सब तारि भितर ही पढि काली में देखते. गोटे जोडे गोटे पढसकता हिची. ओके फटाफट कमेंट करो. कौन आंसर? डी. वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी फटाफट कमेंट. ठीक अछि. जो माने कहछ हैरो पब्लिक स्कूल से माने का आंसर होछि करेक्ट आंसर. को पब्लिक स्कूल रे चर्चिल एडमिशन करथले ना? हैरो पब्लिक स्कूल. ओके. The name of a Churchill's autobiography is, Churchill कर autobiography रा ना कोन थिला? My experiments with truth, sunny days, a roving commission, my early life, an autobiography. Churchill कर autobiography रा नेम कोन थिला? Churchill कर autobiography रा नेम. Churchill कर autobiography रा नेम. 4C. Very good, very good, very good. जो मैंने सब सी ऑप्शन कमेंट करछो, ए रोविंग कमीशन ऑन इयरली लाइफ बा बाय इयरली लाइफ से मान को उत्तर होची ठीक उत्तर. ओके. जीवन नेक्स्ट क्वेश्चन भी जोडे क्वेश्चन नंबर 5. ए रोविंग कमीशन माय इयरली लाइफ वाज पब्लिश्ड को मसियर से पब्लिश कराया था? 1930, 1931, 1932, 1929. को मसियर रे पब्लिश करा जायतिला ए रोविंग कमीशन माय इयरली लाइफ, जोटा कि ऑटोबायोग्राफी ऑफ विंस्टन चर्चिल थिला? फटाफट कमेंट करो. ए 2 और 3 मार्क रो सिलेक्टिव दियंतु. ओके दिया जिवो व्हाट्सएप ग्रुप रे 2 और 3 मार्क रो. बुझिली क्वेश्चन बुझिली दिया जिवो. नेक्स्ट कमेंट करो ये क्वेश्चन आंसर कोन हो? 5 ए ठीक अछि. मोनालिसा ठीक अछि. श्वेता ठीक अछि. अजय ठाकुर ठीक अछि. आकाश ठीक अछि. सिमरन साहू ठीक अछि. नवीन ठीक अछि. ठीक अछि. वेरी गुड. जो माने ए ऑप्शन कमेंट करछ 1930 समानकर आंसर ठीक अछि. ओके. When Churchill entered the inhospitable region of examination he was, जेतबेले से inhospitable region of examination प्रवेश कले से केते वर्ष थे? 10 years, 12 years, 11 years, 13 years. केते इयर्स रा थिली? बी मोनालिसा ठीक अछि. भाग्यलक्ष्मी वेरी गुड. निर्मल्य कुमार ठीक अछि. कितना ठीक अछि. ठीक अछि. सिमरन वेरी गुड बहुत ठीक अछि. बहुत धन्यवाद. जो माने सब बी ऑप्शन कमेंट करछ से माने को उत्तर ठीक अछि. ओके. 12 years old. नेक्स्ट क्वेश्चन तला. He was destined to read there for केते years? 7 years, 6 years, 5 years, 2 years. He has destined to read there for 7 years, 6 years, 5 years, 2 years. केते years? Question number 7 और अपना आंसर कमेंट करो. आशुतोष पानी बी ना बेटा भूल अछि. बी होगा नहीं. संबित बी ना बेटा भूल अछि. बी जो मैंने पूछे से मैंने सब भूल अछि. ओके. ए होछि तमर करेक्ट आंसर. से सेठी 7 वर्ष पढिथिली. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन थिला चर्चिल लाइक टू बी एग्जामिन्ड इन को सब्जेक्ट को एग्जाम दबा को भलो पाउतरे? हिस्ट्री, पोएट्री एंड राइटिंग एसे, मैथमेटिक्स एंड लॉजिक्स, सॉरी मैथमेटिक्स एंड साइंस,
ग्रीक एंड लैटिन ऑल ऑफ द अबव चर्चिल को विषय को एग्जाम दबा पे भल पाउथिले 8 फटाफट कमेंट करो दिस इज वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड आकाश सर डी ना बेटा डी हबनी आंसर भूल कहउछ जो माने डी कहउछ भूल अछि ए वेरी गुड हिस्टोरी पोएट्री एंड राइटिंग एसे हला करेक्ट आंसर ओके एबे जिबा नेक्स्ट क्वेश्चन की द एग्जामिनर्स वेयर पार्शियल टू मैथमेटिक्स साइंस लैटिन एंड मैथमेटिक्स ग्रीक एंड मैथमेटिक्स ग्रीक एंड साइंस कहा को पार्शियल करथि कहा को पार्शियल करथिले 9 बी बी वेरी गुड जो माने बी ऑप्शन बा लैटिन एंड मैथमेटिक्स कोचो से मानकर आंसर होची करेक्ट आंसर साधारणतः एग्जामिनर माने लैटिन एंड मैथमेटिक्स के पार्शियल करथिले the examiners always wanted to ask what the author knew what the author did not know on which the author was in confusion none of the above साधारणतः परीक्षा जो माने करथिले सेमान लेखक को को विषय रे पचारथिले से जोटा जानि छंती जोटा न जानि छंती जोटा को से कंफ्यूजन रे अछंती ना नन ऑफ कोटा पचारुथिले एटा प्ले बुक रे डायरेक्ट लिखा है 10 सी सी ना सी कोचे माने भूल अछि सी होबनी सी होबनी बेटा कहि सी होबनी करेक्शन करो निज लोके जन कमेंट्स को सी होबो नाही बी बी वेरी गुड व्हाट द ऑथर डिड नॉट नो ऑथर जोटा जानि नथिले सेही सब क्वेश्चन को से बारंबार रिपीट करथि when Churchill would have willingly displayed his knowledge the teachers helped him the teachers scolded him the teachers sought to expose his ignorance all of the above केते बळे चर्चिल willingly displayed his knowledge निज नॉलेज को डिस्प्ले कलो ओके बी बी नो बी होची भूल उत्तर सिमरन पहले 11 नंबर सी 11 नंबर सी सी ठीक अछि वेरी गुड ठीक अछि बुझलिन सी 9 श्रावण या बी होबा नाही द टीचर हाउ टू एक्सपोज हिज इग्नोरेंस एटा हला करेक्ट आंसर बाय सी ऑप्शन होची तमरा करेक्ट आंसर ओके जो माने बी कमेंट करछे समार भूल है नेक्स्ट क्वेश्चन दिला द हेडमास्टर ऑफ हैरो पब्लिक स्कूल वाज हैरो पब्लिक स्कूल रे जो हेडमास्टर थिले ताका नाम कोन थिला डी एच लॉरेंस वेल्डन बी आर अंबेडकर लॉर्ड टेंसन कौन थिला हैरो पब्लिक स्कूल रे जे हेडमास्टर थिले ताका नेम कौन थिला वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन डॉक्टर वेल्डन वेरी गुड जो माने डॉक्टर वेल्डन कहउछ समाना उत्तर होची करेक्ट उत्तर ओके 13 number Churchill was unable to answer a single question in Latin paper Greek paper English paper history paper कोउतिरे से गोटे सिंगल क्वेश्चन ମଧ୍ୟ करि परिले नाही कोउतिरे Latin Greek English history ओके वेरी गुड वेरी गुड जो माने लैटिन पेपर कमेंट करछ सेमान को उत्तर होची करेक्ट आंसर ओके माने बारंबार li कहूची तमे माने वीडियो टी को टिके शेयर करो पिला माने जहां भी क्वेश्चन प्रैक्टिस होची तमे ओडिया रो जाओ मैराथन सीरीज देखो ता सहित सिलेक्टिव जहां देथिले लॉन्ग क्वेश्चन देखो ता सहित क्वेश्चन सब प्राय क्वेश्चन पडिथिला बट एक्स रेगुलर पिलाकर किछि भी क्वेश्चन मिस हे जाय मु निजे मो होची एक्स रेगुलर पिलाकर किछि क्वेश्चन मिस हे जायछि जोटा कि पडिनी बट रेगुलर पिलाकर प्रत्येकटी क्वेश्चन पडितला त फटाफट पिला के वीडियो को शेयर कर दियो ओके नेक्स्ट क्वेश्चन तला व्हाट वाज द रीजन फॉर not doing well in the examination कोन पई चर्चिल एग्जामिनेशन रे ठीक करि पाइ नथि it was a great trial for him he was not examined from his favorite subject questions were not asked from what he knew all of the above से जोटा जानि थिले सितरु पचरा हि नथिला कि ताका फेवरेट सब्जेक्ट रे विषय नथिला एटा ताको गोटे कठिनतर काम थिला बा ऑल ऑफ देम कोन सी डी ए नो गुरु तरह दौच पिला माने ठीक है वेरी गुड सिमरन वेरी गुड खाली कितना वेरी गुड गुडन वेरी गुड ओके चार पिला कर ठीक उत्तर आसला कमेंट बॉक्स रे ठीक अछि हमन ठीक अछि ऑल ऑफ द अबव होबो करेक्ट आंसर साधारणतः जो क्वेश्चन पचरा जाइतला ताको आसु नथिला बा ताकर फेवरेट सब्जेक्ट नथिला बा से ताको गोटे कठिन परिश्रम बोली हमथिला त सब उत्तर होबो त ठीक उत्तर ऑल ऑफ द अबव
What did he write in the answer book for the Latin paper? He was able to write all the answer. He did not write his name. He could make only a small blot and several smudges on the answer sheet. None of the above. से कौन करथिले निज लाटिन पेपर जेतबेले लिखिथिले कौन करथिले से सब आंसर लिखिथिले खाली नेम लिखिथिले स्मॉल ब्लॉट एंड सेवरल smudges on the answer sheet करथिले ना none of the above कौन करथिले 15D none of the above नाइ none of the above माने अच्छे आंसर अच्छी पर्टिकुलर अच्छी बुक रे देइछि सी वेरी गुड वेरी जो मैंने सी ऑप्शन कमेंट करछ ही कुड मेक ओनली अ स्मॉल ब्लॉट एंड सेवरल स्मजेस ऑन द आंसर शीट से माने आंसर कले ले माने कहितली गोटे तुकार के फार्मूला कहितली ले देखिबो जो ऑप्शन रो लंबा अधिका हेतिबो बा लेंथ अधिका हेतिबो साधारणतः सेटा ही होई थाए मैक्सिमम केस रे तो एटा को टिके ध्यान दउथिबो इंग्लिश एग्जाम ओके दिस सैड स्पेक्टाकल फॉर द ऑथर वाज not able to answer even a single question in Latin paper. He could answer all the question. He could answer some of the question. None of the above. What होगा correct answer? Correct answer. Very good, very good, very good. Okay. तुकार शिफ्ट कुह बा जहां भी कुह. He has not able to answer even a single question in the Latin paper. Okay. Latin paper से गोटे single question बा गोटे भी question करनथिले. The writer's position in the merit list for admission was he was placed in third division of the fourth, he was placed in the second division, he has placed in first division, none of the above. Merit list रे ताको ना उठी थिला merit list रे ताको नेम उठी थिला देखो सी रूपली ना भूलेसी सी होबा नहीं very good very good जो मैंने ए कमेंट करछो by he was placed in the third division of the fourth समान का आंसर होची करेक्ट आंसर ओके एबे जो नेक्स्ट क्वेश्चन को he gives the credit for his success in the entrance examination to his father his teacher the headmaster Dr. Weldon all of the above कहा को निजर एग्जामिनेशन रे क्रेडिट देथिले पापा टीचर बा हेडमास्टर की है ना डॉक्टर वेल्डन एंड ऑल ऑफ द above देथिले 1866 very good ताको हेडमास्टर को देथिले जहाकर नाम कोन थिला डॉक्टर वेल्डन ओके नेक्स्ट क्वेश्चन थिला द कस्टम ऑफ कॉलिंग द रोल एट हैरो इज केमिति रोल कॉल करा होतिला एट हैरो स्टूडेंट वुड फाइल पास्ट ए मास्टर इन द स्कूल यार्ड एंड आंसर वन बाय वन स्टूडेंट वर रिस्पोंडिंग लाउडली द रोल कॉल्स स्टूडेंट रेज देयर हैंड्स इन देयर नेम्स आर कॉल्ड ऑल ऑफ द अबव केमिति अटेंडेंस पडुतिला हैरो केमिति अटेंडेंस पडुतिला ओके ओके वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड so when a option comment करछ at Harrow students would file past a master in the school year and answer one by one सेमान को उत्तर होछि करेक्ट आंसर ले एगुडा सब डायरेक्ट क्वेश्चन बुक रे देखबा डायरेक्ट अछि कि वोकाबुलरी क्वेश्चन मध्ये ए पीडीएफ रे अछि मु तुम कागो गले देखिबी ए पीडीएफ रे तमरा जे डिक्शनरी स्किल रे मध्ये गोटे क्वेश्चन से अछि ओके तो फटाफट हमें जिबा देखिबा students taught Latin and Greek at Harrow where the clever student, the dull student, the average student, none of them. कहा को Latin और Greek री शिक्षा दिया जाउतला Harrow clever, dull, average, none of them. कहा को शिक्षा दिया जाउतला 20 very good very good क्लेवर और स्टूडेंट्स माने को लैटिन और ग्रीक रो शिक्षा दिया जाउतला जो माने डल बा एवरेज है से माने उत्तर भूल कहिछ ओके व्हाट डज an influence mean an influence रो मीनिंग कोन पासिंग एन एग्जाम इजीली पुटिंग योर bet on a single number scoring high in the class pure gamble an influence माने कोन an influence क्वेश्चन नंबर भी नहीं तो question number A passing an exam easily no already assist Guruthan question B putting your bet on a single number है तुम्हारा correct answer okay children love to play with
Speak of the transitive verb এই বাক্যরে transitive verb কোটা ଅଛି সেটাକୁ বাছিব love to play play and play with transitive verb কোটা transitive verb କହିଲେ କଣ ବୁଝେ ନା ସାଧାରଣତଃ ମୁଖ୍ୟ କ୍ରିୟା ସହାୟକ କ୍ରିୟା ସେଇଟା ବି ଗୋଟେ କ୍ରିୟା ଗୋଟେ ଏଠି ମୁଖ୍ୟରେ ନାହିଁ ସହାୟକ Chse 22 a love B बहुत पिला कमेंट करछो P हला टू प्ले कोन हम फटाफट कमेंट करा सी मध्ये किछि पिला आसन कमेंट कलेनी प्ले एठी देखो दुईटी वर्ब अछि गोटे हला लव आ गोटे हला प्ले बुझि परलो एठी मुख्य के शिक्षार्थी माने बा पिला माने भलो पांती खेलना सहित खेलिबाकू भलो पांती खेलना सहित खेलिबाकू होछि तमरा मुख्य क्रिया किंतु लवटा होछि एसेटिव बा ताको सहायता करूछि से मुख्य क्रिया नुह तो सेटा हबो तमरा ट्रांजिटिव वर्ब तेनु 22 नंबर ए हबो तमरा करेक्ट आंसर ओके नेक्स्ट क्वेश्चन reckless driving leads to accident driving reckless leads to accident एठी पछारछि ऑब्जेक्ट की काली जो माने क्लास करूथिलो सूर्यसान कर से माने भल से जानिथिबो कि ऑब्जेक्ट केमिति फाउंड आउट करा जाय ऑब्जेक्ट केमिति फाउंड आउट करा जाय फटाफट कमेंट करा ऑब्जेक्ट किया होगा काली जो माने क्लास करूथिलो तो जानिछि को माने काली क्लास करथलो तम जानिछि फटाफट कमेंट कर देखिए कितना कहले डी ओके ठीक है जी नेक्स्ट के कहूची रूपाली ओझा मध्ये कहले डी रूपाली राजधानी कहले डी आकाश साहू डी मामून डी ओके 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 वेरी गुड ओके 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 डी वेरी गुड जो माने एक्सीडेंट कमेंट्स करछो से माने को उत्तर ठीक अछि ओके एटी एक्सीडेंट ता होची ऑब्जेक्ट ओके बुझि परलो पिले मन रखिता साधारणतः कोन ना जेता बेले गोटे जिनिस को हु लगेई प्रश्न करिवो जोटा बाहर सेटा को हम कहे सब्जेक्ट बुझिलो जेता बेले व्हाट लगेई पचरा जाय सेता बेले जोटा उत्तर बाहर सेटा को हम ऑब्जेक्ट बेली कहू बुझि परलो एटा ध्यान देइतबो वाक्यटा को हु लगेई प्रश्न करो ताहले सेटा सब्जेक्ट जोटा व्हाट लगेई प्रश्न कले जोटा उत्तर बाहर सेटा हला ऑब्जेक्ट ओके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 People who live in glass houses don't throw stones at others. जो माने काच घरे रहते से माने अन्य ऊपर टेका पकाडती नहीं. Pick the principal clause. People who live in the glass houses, people don't throw stones at others. Who live in glass houses don't throw stones. कोटा principal clause बा जोटा को जाय main clause. ए चारोटी भितरु कोटा main clause. ओके मैं छोट कर दो स्क्रीन में समस्त क्वेश्चन टा फुल देखा जिवो एबे देख कमेंट करो कोटा या देलु मेन क्लॉज कोटा मेन क्लॉज ताबड कमेंट करो बी 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 लोक माने टेका पकांती नाही जो माने कि घरे रुहंती ताले फर्स्ट क्लॉज किए ना लोक माने टेका पकांती नाही किए से को लोक माने टेका पकांती जीए काच घरे तेणु फर्स्ट क्लॉज एठी तमर किए बा प्रिंसिपल क्लॉज किए पीपल डोंट थ्रो स्टोन्स एट अदर्स ओके एटा हला तमर करेक्ट आंसर इबा नेक्स्ट क्वेश्चन की we played out it was that pick the subordinate clause main clause no पता subordinate clause by second clause we played out until it was dark until it was dark तो subordinate clause आमे खेलितुलु जेते बेले जे सेही अनुसार आमे खेलितुलु जेते बेले जे संध्या होई नथिला सेही अनुसार हम करा फटाफट देखि दिए एठी मन रखिता प्लेड आउट होची गोटा फ्रेजाल वर्ब ओके तो एटा गोटा क्लॉज सेही अनुसार देखि दिए आंसर दियो फटाफट डी 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 कितना मामूली रूपाली पूजा
अंजलक्ष्मी मोनालिसा संबित दी ऑप्शन है वेरी गुड जो माने डी ऑप्शन कमेंट करछ until it was dark समान उत्तर होची ठीक उत्तर ओके नेक्स्ट क्वेश्चन के जिबा द pranks injured at the bath to come up behind someone and to push him into the pool physically assaulting scolding in slangs all of the above એટલે এটা તમારો કોણ આસીલા ટોપિક ઉતો ગ્રામર પાર્ટ રે କିଛି ଡେଟା କ୍ୱେଶ୍ଚନ ହେଲା এটা ଟપિକ ଉତ ଆସିଲା ଏକ୍ସାମିନେସନ prank they injured at the bath to come up behind someone and push him into the pool physically assaulting scolding in slangs all of them कोण करथि केम्बोई prank करथि 26 ए ठीक है ए 3 जो माने ए कमेंट करूछ बट टू कम अप बिहाइंड समवन एंड पुश हिम इनटू द पूल पाखु को आसुतले जनक पाखु को आसुतले और हठात ताकू कोन करतले ना पूल भितर को पकई दोतले एटा होची करेक्ट आंसर ओके व्हाट डिड द राइटर टू द बॉय स्टैंडिंग इन मेडिटेटिव पोस्चर लेखक मेडिटेटिव पोस्चर रे छिड़ा हिच पिला सहित कोन करथिले द राइटर स्टिलली केम बिहाइंड हिम and pushed him into the pool ता पाखु को धीरे सुस्ते आसी के पूल भितर को पकई दिथिले the writer asked him what he was doing से कोन करछि बेले पचारथिले the writer told him not to jump ता कहथिले तमे डिया नाही none of the above कोन कहिथिले राइटर ता राइटर जो पिलाटी मेडिटेटिव पोस्चर रे छिड़ा हिचला ताको कोन करथिले करथिले very good the writer stealthily came behind him and pulled him into the pool hela tamra correct answer okay jiban next question what was the reaction of the boy he was very angry with the prank he laughed at the prank he was insulted at the prank he took it slightly बराबर कमेंट करो कोन ओवर 28 का आंसर से prank को से पिलाटी केमिति रिएक्ट करथिला 28 का आंसर कोन होगा ए very good इतना बाबू लिखते मोनालिसा फकीर कुमार रुक्मणी राधारी आशीष ठीक अछि श्वेता ठीक अछि जो माने कहछ he was very angry with the prank सेटाला करेक्ट आंसर ओके the writer came to know that Ameri कोन थिला in the 6th form in the 5th form in the 7th form none of the above Ameri को थिला 6th 5th 7th no को थिले Ameri थिला very good Ameri थिला 6th form okay जिबा next question the writer apologized for his misconduct by saying sorry for playing that prank and said that he mistook Ameri for a fourth form boy से भाबिले से गोटे fourth form boy बोली manage it as they belong to same school जेहेतु समान समान स्कूल सेति में छाडला कहि he would not to do that again से पुणी एमिति करियो नै बोली कहिले बा none of the above केमिति निज भूलटा को राइटर मने करथि बा केमिति निज भूलटा को दोषकटा को क्षमा करथना कहथि फटाफट कमेंट करो क्वेश्चन टा देखे दोछि छोटो कर दोछि ठीक अछि बाबू पले ठीक अछि कार्तिक से बोली देखो ठीक अछि श्वेता ठीक अछि जो मैंने कहितला सॉरी फॉर प्लेइंग दैट प्रैंक एंड सेड दैट ही मिस्टूक Ameri फॉर ए फोर्थ फ्रॉम बॉय से फोर्थ फ्रॉम बॉय बाबे आके Ameri की ठेली देथिले पूल में की जो तो कहितले समानला करेक्ट आंसर ओके the writer was guilty of playing a prank because Ameri was his senior and a boy of enormous strength, fame and reverence. Ameri was not known to him. Ameri would have been insulted all of the above. कौन पाई राइटर को गिल्टी फील है कौन पाई राइटर को गिल्टी फील है वेरी गुड जो मैंने ए कमेंट करछ कोन पे गिल्टी फील हेतरा ना Ameri थिले जने सीनियर ता सहित ए बॉय ऑफ एनोमरस स्ट्रेंथ फेम एंड रेवेन्स दक्ष प्रत्यक्ष सब ताकर थिला सेति पय राइटर को निजे को खराब लागी थिला ओके the matter ended happily for the writer when Ameri laughed and asked Churchill to be cautious in posture Ameri told the headmaster about this Ameri beat him all the above केतबळे मैटर ता एंड हैला जेतबळे Ameri हसिकरी चर्चिल को कॉन्टेस्ट इन फ्यूचर रे कहिला Ameri टोल्ड द हेडमास्टर अबाउट जेतबळे हेडमास्टर नै कहिला Ameri जेतबळे बाडेइला
not all of the above. कोटा ना करो very good, very good. जो केते जण पिला कमेंट करछथि सेही समान पिला कमेंट करछथि अन्य जण कोन पे कमेंट करो फटाफट कमेंट करो भूल हो पिला मने रखता फेल्युअर इज द की ऑफ सक्सेस गोटे भूल कले ही तमे ठीक बाट को जीवो तेणु भूल हो पछे कमेंट करो ओके ठीक अछि छोटा वेरी गुड आमेरी लास्ट एट आस्क चर्चिल टू बी कोर्टियस इन फ्यूचर जो सीनियर टू चर्चिल बाय केते सीनियर थिला 3 इयर्स 2 इयर्स 4 इयर्स 5 इयर्स आमेरी केते सीनियर थिला a very good class 3 years hoji tamara correct answer next question thila ameri was an officer in Churchill's government the secretary of state for India in Churchill's cabinet the member of the government none of the above ameri kon heitira bhavishyat Churchill government officer ki secretary heitala state India re ba member of government thila ba none of the above Churchill kon thila for B ठीक है वेरी गुड जो मैंने बी कमेंट करछो बट द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया इन चर्चिल्स कैबिनेट से मानकर उत्तर होची करेक्ट आंसर ओके आमेरी वाज जूनियर टू चर्चिल इन आमेरी कोतेरे जूनियर थिला चर्चिल को ठानु एज स्टैच्यूर फैमिली स्टेटस ऑल ऑफ द अबव आमेरी चर्चिल को ठानु केउतिरे जूनियर थिला एज स्टैच्यूर फैमिली स्टेटस ऑल ऑफ द अबव थिरे आमेरी सानो थिला 35 B C होता है फैमिली स्टेटस का कौन सी पार्ट यूज करा जाएंगे ये B स्टैच्यूर हो तमरा करेक्ट आंसर ओके द पैशन ऑफ द राइटर एट स्कूल he was counted amongst the dunces and stupidest boys he was counted as an intelligent boy he was an average boy all of the above राइटर को स्कूल रे पोजीशन केमिति थिला इंटेलिजेंट थिले कि एवरेज थिले कि बारंबार खाली स्टूपिड पिला को सहित मिसी के खराब काम करथिला बा ऑल ऑफ देम कोटा थिला ता करो राइटर करो 35 35 35 35 36 sorry 36 क्वेश्चन नंबर 35 35 36 को मैंने कमेंट क्वेश्चन देखी ए मुनासा का कार्तिकेश्वर ए श्वेता ए वेरी गुड जो मैंने ऑप्शन ए कमेंट करछे भाई ही वाज काउंटेड अमंगस्ट द डॉन्सेस एंड स्टूपिडेस्ट बॉयज समान का आंसर होची करेक्ट आंसर ओके नेक्स्ट क्वेश्चन थिला चर्चिल won a prize at school by writing an essay participating in the debate competition reciting to the headmaster 1200 lines of Macaulay Village of ancient Rome without making a single mistake all of the above कौन पाई चर्चिल को प्राइज दिया जाइथिला कौन पाई चर्चिल को प्राइज दिया जाइथिला 37 फटाफट कमेंट करो 37 C very good reciting to the headmaster 1200 lines of Macaulay Village of ancient Rome without making a single mistake रे जेतु पढिथिला ताको प्राइज दिया जाइथिला ओके नेक्स्ट क्वेश्चन थिला the competition was open to dash student lower class higher class whole school all of the above कहा पाई competition टी थिला lower class higher class whole school all of the above अगे सी आशीष मोदुल ए नाइ बेटा ठीक अछि 37 सी 37 ना 38 रो 38 सी वेरी गुड जो माने सी कहउछ होल स्कूल सेवन को उत्तर होची करेक्ट आंसर ओके नेक्स्ट क्वेश्चन थिला नोट और द अचीवमेंट एट स्कूल वेयर कोन ताकर नोट और द अचीवमेंट थिला he passed the preliminary examination for the army while at the bottom of the school won a prize for reciting 1200 lines of Macaulay's Village of ancient Rome without making a single mistake both A and B none of the above कोटा ताकर अचीवमेंट थिला पिले प्रश्न रे देखो वेयर अछि वेयर मींस गोटे अचीवमेंट नो दीटा अचीवमेंट थिबो कि तीनटा थिबो किंतु मोर देन वन हो तले कोटा आंसर हो से अनुसार भाबि चिंती कमेंट करो 38 38 ना 39 चलछि पण दीटा आंसर को 39 चलछि तो बेटा 39
39 39 सी सी जेहेतु बोथ बा दीटा हबो बोथ ए एंड बी जेहेतु वेयर ऑप्शन अछि तेनु बोथ बी हबो करेक्ट आंसर पिले जो क्वेश्चन न आसीबो देखिबो तादरे किछि एमसीक्यू रे ट्रिक्स बा टिप्स हो सेही अनुसार मुंड प्ले करबो हेइ जिवो द फर्स्ट क्वेश्चन इन द प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन फॉर द आर्मी वाज आर्मी रो प्रिलिमिनरी एग्जाम रे फर्स्ट क्वेश्चन कोन थिला टू ड्रॉ ए मैप ऑफ न्यूजीलैंड टू ड्रॉ ए मैप ऑफ ऑस्ट्रेलिया टू ड्रॉ ए मैप यूरोप नॉन ऑफ द एबव कहारो मैप ड्रॉ करबा को पचारथिला न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया यूरोप नॉन ऑफ द एबव कहारो ड्रॉ करबा को पचारथिला 40 क्वेश्चन नंबर 40 वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड ठीक है टू ड्रॉ ए मैप ऑफ न्यूजीलैंड वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन एटा गोटे आ कोन पाई ताकू प्राइज मिलिथिला गोटे आ से पिलाटा किए थिला जा राइटर पूल भितर को पकैथिले ए भलिया क्वेश्चन बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन एकरा दे ध्यान देइथिबो ओके हाउ आर द एग्जामिनेशंस टू बी ऑथर हैप्पी ओकेजन डिफिकल्ट टू पास ए ग्रेट टाइम हार्ड टाइम लेखकक पई एग्जामिनेशन ता केपरि थिला फटाफट तुम करो 41 लेखकक पई एग्जामिनेशन ता केपरि थिला 41 सी सी बी सी सी वेरी गुड जो माने एक ग्रेट ट्रायल कमेंट करछे से माने आंसर करेक्ट आंसर ओके हाउ आर द एग्जामिनेशन क्वेश्चंस टू द ऑथर डिफिकल्ट टू आंसर इजी टू आंसर अनअट्रैक्टिव अनसैटिस्फैक्टरी एग्जामिनेशन ऑथर को पई केमि थिला डिफिकल्ट टू आंसर इजी टू आंसर अनअट्रैक्टिव अनसैटिस्फैक्टरी कि परि थिला 32 42 ए वेरी गुड मनालसा रोजालिन मामुनी सिमरन भाग्यलक्ष्मी श्वेता आकाश जे गेम्स समथिंग गेम्स वेरी गुड कार्तिकेश्वर नेहा कुमारी बी नो बेटा बी नो ओके वेरी गुड क्वेश्चन नंबर 42 रा आंसर थिला डिफिकल्ट टू आंसर ओके नेक्स्ट क्वेश्चन थिला व्हाट वुड हैव चर्चिल willingly displayed if he were examined in his favorite subject his knowledge his ignorance his arrogance his grasp on that subject जेता ताका फेवरेट सब्जेक्ट रे एग्जाम होला से तादरे कोन दर्शाई थिले ताका नॉलेज इग्नोरेंस एरोगेंस ग्रास्प ऑन द नॉलेज कोन ताको दर्शाई थिले 43 बी नो सिंगल बी होबो नै हम बी होबो नै इग्नोरेंस हो 43 ए वेरी गुड सेटा का नॉलेज दर्शाई थिले इग्नोरेंस मींस से कोन कि जो सब्जेक्ट को इग्नोर करी कम ध्यान देली कि से कोन से पर अधिक ध्यान देथिले कि से ठीक करि परथिले निग्लेक्ट करता तेनु हिज नॉलेज होबो करेक्ट आंसर the headmaster show in judging Churchill's general ability concern anger content discernment what did the headmaster show in judging Churchill's general ability Churchill's general ability की केमिति जज कर देले concern anger content discernment फटाफट कमेंट करो 44 D very good discernment होस तमरा करेक्ट आंसर ओके दिबा नेक्स्ट क्वेश्चन प्ले सब डायरेक्ट वर्ड बुक रे अछि देखिबो why did Churchill keep on staring at his paper after writing down the number of the question 1 by I did not know any answer he did not like the Latin paper he did not want to get into harrow he did not love Latin paper कोन पई से एक लिखि के रहि गले से आंसर जानि नथिले किछि कि लाटिन पेपर जानि नथिले किछि बा से चाहु नथिले हायर एडमिशन पई बा लाटिन से पूर्व पढि नथिले क्वेश्चन पेपर ग्रुप रे सेंड करिवो कि नै सर को क्वेश्चन पेपर कथा बोलछो टिके क्लियर आंसर करो 45 पिला माने अन्य माने आंसर कमेंट करते दा 45 डी मैक्सिमम पिला कोन डी कमेंट करछो लाटिन पूर्व पढि नथिले ना आंसर होबनी अपने आंसर 45 ए भाग्यलक्ष्मी वेरी गुड नेहा कुमारी यस सर ठीक अछि श्वेता ए जो माने ए कमेंट करछो बा तांको कोनोसे आंसर ही जणा नथिला समानक आंसर होची करेक्ट आंसर
ताकू जोटा जणा नथला जे कहछ तम मानक से ओके 46 What would be the only thing Churchill would whip the clever boys for? Not knowing English poetry, nor writing English essay, not knowing English, making fun of him in school. What would be the only thing Churchill would whip the clever boys for? कौन पे ना clever boys को आदर को टीच सकते हैं? फटाफट 46 46 एस कौन हमें मना से लिखा एस तो कुछ नहीं ऑप्शन सी डी नो डी हमारे मना सी नो 46 और भी ए को लिखना ए हमारी जो मैंने सी कमेंट करछन नॉट नोइंग इंग्लिश इज देयर गुड आंसर ओके इवन नेक्स्ट क्वेश्चन व्हेन डिड चर्चिल फर्स्ट वेंट टू हैरो केबे जाइथिले समर विंटर विंटर स्प्रिंग टर्म केते बळे जाइथिले हैरो हैरो को चर्चिल केते बळे जाइथिले 47 ए वेरी गुड जो माने इन द समर टर्म कमेंट करछन समान को उत्तर होची करेक्ट आंसर How was the swimming bath at Harrow? Like a big pond, like a bend of a river, like a big swimming pool, like a big room. Swimming bath at Harrow. Like a big pond, like a bend, like a big swimming pool, like a big room. केमिति थिला? अरे सी कौन प्रोनाउंसिएशन कले like a big swimming pool. No से कछि कंपेयर काहे सहित करा हैछि? 48 चेष्टा करो क्वेश्चन के बुझिबा को चेष्टा करो भाग्य लक्ष्मी वेरी गुड ठीक अछि तमरो क्वेश्चन के बुझिबा को चेष्टा कर से कहछि स्विमिंग इन बाथ एट हैरो केमिति लागुथिला बिग पॉन्ड भलिया नाइ लाइक ए बेंड ऑफ ए रिवर होछि तमरो करेक्ट आंसर ओके बुझि परलो ना नहीं ओके हाउ मेनी ब्रिजेस डिड द स्विमिंग बाथ हैव अक्रॉस इट 1 2 3 4 केतेटा ब्रिज थिला स्विमिंग बाथ अक्रॉस मचे गोटे दुईटा तीनटा जमा नथिला केतोटी थिला 49 49 49 बी वेरी गुड 49 बी वेरी गुड जो माने बी कमेंट करछ 2 समान आंसर होची करेक्ट आंसर ओके जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन की द स्कूल possessed the biggest dash Churchill had ever seen conference hall cafeteria swimming bath classroom कोनटा गोटे एते बड़ थिला कि चर्चिल ताको फर्स्ट टाइम ताको जीवन रे देखिथिले कॉन्फ्रेंस हॉल कैफेटेरिया तापर स्विमिंग बाथ क्लासरूम से कैफेटेरिया टाइप कैप्टन हबो ओके ठीक अछि फटाफट कमेंट करा क्वेश्चन नंबर 50 सी वेरी गुड स्विमिंग बाथ होची तमरा करेक्ट आंसर ओके जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन की जोटा क्वेश्चन नंबर 51 એટલે 51 क्वेश्चन ना मिसिंग अछि Why did Churchill consider America fair game? He looked no bigger than Churchill. He looked lost in his thoughts. He looked an essay target. He was standing next to Churchill. Why did he consider America fair? कौन पाए America fair game हिसाब रे consider करे Churchill. 52 Michaelis A Namura A Monalisa A very good. He looked no bigger than Churchill. ସେଥିପାଇଁ ସେ ତାକୁ ଫେୟାର ବୋଲି କହିଥିଲେ why did Churchill hold on to Ameri's towel not to let Ameri get out of water not to let it get wet not to let Ameri wear it again to keep it safe कोन ପାଇଁ Churchill करथिला Ameri's towel को धरती 53 এটা পুরা ইজি কোশ্চেন very good not to let it get wet okay very good जो माने बी कमेंट करछो सरल उत्तर होची ठीक what did he do with Churchill after he caught him dragged him into the pool beat him up with his friends took away his towel scolded him fiercely कोन करथिले अमेरी चर्चिल सहित जेतबे से ताको धरि पकेइଥିଲେ
54 कौन करथिले चर्चिल आमेरी सहित सॉरी आमेरी चर्चिल सहित उल्टा 54 सी 2 कवे ही टावर नो 54 सी नो कमेंट करो फटाफट कमेंट करो 54 ए रोजालिन को ए वेरी गुड dragged him into the pool होच तमरा करेक्ट आंसर 55 थिला by whom did Churchill find himself surrounded by on the other side a crowd of older boys his friends a crowd of younger boys a crowd of cleverer boys चर्चिल को चारिपटे जो क्राउड छिड़ा हेतला ते कोन थिले ए क्राउड ऑफ ओल्डर बॉयज माने बड़ पिला सब थिले बा ताको संग थिले यंग पिला थिले बा ताको सानो पिला थिले बा ताको सब चालाक पिला थिले चारि रिएक्शन अछि कोटा नंबर करेक्ट आंसर 55 very good C a crowd of younger 56 होची which form was Ameri in Ameri को फॉर्म ने थिला थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ को फॉर्म रे Ameri थिला फटाफट कमेंट करो को फॉर्म रे Ameri थिला D very good in the sixth form which of the following is not an achievement of Ameri Ameri the achievement boy head of his house champion at gym got his football colors champion of Latin poetry कोटा आमेरी रो गोटे अचीवमेंट नथिला 57 कोटा आमेरी रो गोटे अचीवमेंट नथिला चैंपियन ऑफ लैटिन पोएट्री होच तमर करेक्ट आंसर चर्चिल वाज convulsed not only with terror but with the fear of a punishment inferiority complex guilty of a sacrilege repentance for his misconduct चर्चिल convulsed हे जेथिले बा भय रे छलना हो फटाफट कमेंट करो 58 सी वेरी गुड जो माने सी आंसर कमेंट करछ बा गिल्टी ऑफ सैक्रिलेज से मानकर उत्तर होची ठीक उत्तर ओके 59 व्हाट डिड चर्चिल डिसाइड टू डू इमीडिएटली कोन डिसाइड करले संगे संगे इमीडिएटली करबो अपोलोजाइज टू अमेरी फ्ली फ्रॉम ऑफ द प्लेस हैव ए फाइट विथ अमेरी गिव अमेरी टावल बैक कौन डिसाइड करथिले संगे संगे करना पाए ये दर्शक very good apologize to Ameri होची करेक्ट आंसर व्हाट वाज द एज डिफरेंस बिटवीन Ameri एंड चर्चिल Ameri और चर्चिल ର एज डिफरेंस केते थिला Ameri और चर्चिल ର एज डिफरेंस केते थिला Ameri एंड चर्चिल ର एज डिफरेंस केते थिला फटाफट कमेंट करो कितना 2 3 4 5 केते थिला बी वेरी करेक्ट चर्चिल गॉट सक्सेस इन द पेपर पाई सक्सेस चर्चिल पाइले he put all his efforts and good memory to one map that was on New Zealand and to his luck he got the same question in the paper से गोटिए मैप को भलो कर देखितले तार लॉक अनुसार सेही गुटी का पड़थिला the answer was given to him and he got success ताको उत्तर दे देतला he got success due to his father's reputation ताका बापा का reputation जो सक्सेस पाइतले बा ऑल ऑफ द अबव कोटा तमर करेक्ट आंसर तू कामरा जो ट्रिक कहतिली सेही ट्रिक रे तू कामरा वेरी गुड ए होच तमरा करेक्ट आंसर से केवल न्यूजीलैंड मैप देखि कि जाइतला और सेही गोटा का भाग्यवशत एग्जाम रे पढिथा in whose favor was Churchill biased boys learning Greek boys learning Latin boys learning English boys studying in the health in whose favor was Churchill biased boys learning Greek learning Latin learning English studying in health very boys learning English होची तमरा करेक्ट आंसर ओके नेक्स्ट थिला what would if he were to decide what the boys should learn he would make them all learn English he would not let them learn Greek he would not let them learn Latin he would whip them hard जदि ताकू डिसाइड करिबा को दिया जाय छाता चर्चिल कि चर्चिल कोन करथाते बेली कहि छथि he would make them all learn English he would not let Greek
he would not let them learn Latin, he would whip them hard. 63. 63. Kartikeswar A. Very good. Very good, very good, very good. He would make them all learn English. ସମସ୍ତେ ଇଂଲିଶରେ ପଢନ୍ତୁ ବୋଲି ସେ ଡିସାଇଡ୍ କରିଥାଏ. Churchill would let the cleverer ones learn Latin, reward, honor, treat, option. Churchill Latin की किपरि पढ़िथिले? Reward, honor, treat, option. फटाफट कम करो. 64 आंसर कोन हो? फटाफट कम करो. B. Honor होछि तमरा करेक्ट आंसर. ओके. Next is Churchill would let the clever ones learn Greek as a or a. Churchill clever one. A same question है ये इसमें छोटे कॉन्सेप्ट बता लाଗୁଛି. Sorry. हाँ एटा अलग আছে. এটা লাতিন না এটা গ্রিক আছে. গ্রিক কি কেমিতি পড়ଥିଲେ? Reward, honor, treat, option. গ্রিক को केमिति पढ़िଥିଲେ? दिटा डिफरेंस देखो. लातिन के honor वाली पढ़िଥିଲେ. ग्रीक की केमिति पढ़िଥିଲେ? ग्रीक की 65 ग्रीक की केमिति पढ़िଥିଲେ? आज ए ट्रीट. बुझिलो? लैटिन की पढ़िଥିଲେ ऑनर हिसाब रे आउ ग्रीक की पढ़िଥିଲେ ट्रीट हिसाब रे. ओके जीवन नेक्स्ट क्वेश्चन की. नेक्स्ट क्वेश्चन तला हाउ आर द नेम्स ऑफ द बॉयज इन द स्कूल लिस्ट इन द ऑर्डर ऑफ मेरिट इन अल्फाबेटिक ऑर्डर इन द ऑर्डर ऑफ ग्रेड इन द ऑर्डर ऑफ एडमिशन नंबर. केमिति प्रिंटेड करा जायतिला स्कूल लिस्ट रे? अल्फाबेटिक मेरिट अनुसार कि ग्रेड अनुसार कि ताका एडमिशन नंबर अनुसार केमिति ताको ये करा जायतिला? 66B in alphabetic order होछि तमरा करेक्ट आंसर. Churchill was in fact the dash from the bottom of the whole school. Last, third, second, first. से bottom रे थिले. Last रे केते नंबर रे थिले? Last रे थिले, third रे थिले बा last रे second रे थिले बा last रे first रे थिले. 67 होछि B. Last रे 3 नंबर रे थिले. Where was the Churchill studying before he got into Harrow? जेतबेले से हैरो को गले ता पूर्वरु से कोठी पड़तले? एटन, एल्टन, एटन, एटियन. प्लीज टिके खाली प्रोनाउंसिएशन सब सेम, खाली टिके स्पेलिंग रे एपट से पड़ल. कोटा है करेक्ट आंसर? ए ने कोन करो के रिसर्च करती 68 रो एटन. ओके. Who was Lord Randolph Churchill? The author's father, the author's teacher, a civil servant, a headmaster of Harrow. Lord Randolph Churchill होचंती किए? author का father, author का teacher, civil servant और headmaster of Harrow. कोटा करेक्ट? 69 फटाफट कमेंट करो. 69 सियोर आसीबो तो बेटा क्लास करि सरिबो, एग्जाम क्वेश्चन देखि सरिबो, पुन जेतबे नेक्स्ट फिजिक्स रा मु नीचे आसीबी ठीक बेला से कमेंट बॉक्स रे कमेंट करबो निजरा बता कि सर आसीथिला कि न. ओके. 69 ए author's father. Who was Churchill's English teacher? Dr. Leopold Emery, Lord Randolph, Mr. Somerville. English teacher किए थिले? इंग्लिश टीचर किए थिले चर्चिल करो? 70 नंबर डी मिस्टर समरवेल होछि तमरा करेक्ट आंसर. ओके. स्टूडेंट्स taught only English where themselves having no inclination toward Latin, Greek or mathematics. The cleverer students, the average students, all of the above. काहाकू पढ़िया जाउथिला इंग्लिश? इंग्लिश काहाकू पढ़िया जाउथिला? Nonsense having no inclination towards Latin, Greek or mathematics. Okay. Everyone, next question. The best teacher to teach English was Mr. Weldon, Mr. Samuel, Mr. Samuel, none of the above. ये बेस्ट टीचर थे इंग्लिश पढ़ाई भीतर? वेल्डन, समरवेल, सामुएल, नॉन ऑफ देम. फटाफट कमेंट करो फटाफट. 72 बी. वेरी गुड मिस्टर समरवेल. The part of the English grammar he learned from the Somerville. कौन से ग्रामर रो को पार्ट टा पढ़िले समरवेल तो? Phrasing and English analysis,
components of a sentence like subject, object, verb and clause, structure of the ordinary British sentence, all of the above. कोनटा से समरवेल ठाରୁ पढिथिले फटाफट कमेंट करो 73 कोन से विंस्टन चर्चिल कोन पढिथिले मिस्टर समरवेल ठाରୁ 73 क्वेश्चन नंबर 73 all of the above माने component of a sentence like subject, object, verb and clause पढिथिले ordinary British sentence पढिथिले English analysis पढिथिले तो all of the above होछ तमरा करेक्ट आंसर. The writer scored over the cleverer school fellows in after years because he thoroughly learned English, thus it got into his bones. The boys could not learn so quickly as the author could. The author got more time to read, none of the above. से इंग्लिश को thoroughly माने पूरा भलो भाबरे पढितले सेति पई क्लेवर रो बॉय चालाकी पिला माने नॉट लर्न से माने पाठ पढि नथिले सेति पई ये पास करि गेले. The author got more time पढिबा को अधिक समय पाए none of the above. कोटा करेक्ट आंसर हो 74 74 A. He thoroughly learned English, thus it got into the bones. से बहुत thoroughly पढितले धीरे स्थिर रे ध्यान सहकारे पढितले सेति पई ना तो कले हाडा भितर भितर पसि गेला. Boys enjoyed in a large number at the swimming bath, eating buns on the hot alphabet margin, biscuits and bread, cake and soft drinks, none of the above. Enjoy करथिले swimming bath रे कोन खाइथि 75 buns on the hot asphalt margin. Very good. Okay. Even next को oh sorry. ये थिला ताले तमरो my greatest no এটা হলা on examination chapter top 75 MCQ. नेक्स्ट रहिला तमर इंग्लिश रो पोर्ट्रेट ऑफ लेडी बहुत सारा गोटे चैप्टर रे बहुत क्वेश्चन आछि. वाओ वेरी गुड या पर दी पोर्ट्रेट ऑफ लेडी. ओके फटाफट पिला माने ऑलरेडी तम क्लास 1 आवर कंप्लीट हे गलानी. वर्तमान 5 मिनिट्स रो ब्रेक निया तापरे हमें नेक्स्ट पोर्ट्रेट ऑफ लेडी की जीवा. ये बहुत क्वेश्चन अछि बहुत क्वेश्चन अछि पिला माने केयरफुली ही देखो कारण मने रखिता एमसीक्यू जोठु भी चाहेबो सेठु पछारी पारिबो. तमे जेते एमसीक्यू प्रैक्टिस करबो सेते तुम पई भलो. ओके बुझी परिलो समझते. ओके क्वेश्चन पैटर्न सब केमिति आसीबो कोन इंग्लिश रो क्वेश्चन पैटर्न मु तुम ग्रुप रे फॉरवर्ड करथिली. एक मार्कर 15 टा आसीबो प्रोज पोएट्री एवं स्टोरी. ता सहित एक मार्कर 15 टा आसीबो तमर ग्रामर. ये जो 30 टी क्वेश्चन रहले ये सब तमर हला एमसीक्यू. ता सहित तमर लॉन्ग क्वेश्चन आसीबो दुईटी. गोटे हला रिपोर्ट राइटिंग आ गोटे हला नोट राइटिंग. बुझिलो 10 मार्क 40. सेमति प्रोज सेक्शन रो दुईटी 2 मार्क, पोएट्री सेक्शन रो दुईटी 2 मार्क, तापर स्टोरी सेक्शन रो दुईटी 2 मार्क. केते हला 12 मार्क. ये 12 मार्क रहला तमर कोन ना हमरो 2 मार्क या क्वेश्चन. तो 8 हे गला 52. आ बाकी तमर राइटिंग स्किल रे जो अछि डिक्शनरी स्किल रहिला तबा अदर राइटिंग स्किल रहिला इतरु मध्य 15-16 मार्क आसीबार अछि. ओके एते सब विषय 8 मार्क क्वेश्चन आसीबे. सर पाए चार्ट आउट रोड मेकिंग टिके बुझाई देबे प्लीज. हम एबे ही कहथि पिला को सेटा गोटे स्पेशल क्लास नै कि तदरे पाए चार्ट रोड मेकिंग थोड़ा सब बुझाई दे. ग्रामर सिलेक्टिव दियंतु ग्रामर ऑलरेडी ग्रुप रे क्लास होछि. क्लास सरला पर सर भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करोछथि सेही क्वेश्चन ही सिलेक्टिव क्वेश्चन प्रैक्टिस करिया. ओके नेक्स्ट आ होछि अब कहां कौन डाउट अछि कमेंट करो. 47 पोएट्री पोएम सबुथु पैराग्राफ दिया है क्वेश्चन आसीबो कि ना आसीबो ना. नेक्स्ट ओके 5 मिनट्स ब्रेक नियो 11:17 स्टार्ट करियो. ओके
ओके सर ग्रामर स्लिप दियंतु प्लीज ऑलरेडी तो एबे सेही समान कथा ही कहूची प्लीज जहां दिया होची एबे ग्रुप रे दिया होची ग्रामर रो सार जते बळे भी पठेले म तमान को प्रोवाइड कर देबी ओके डोंट वरी सेति ओके लमने नेक्स्ट चैप्टर तमर थिला कि पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी ओके पोर्ट्रेट ऑफ लेडी का एमसीक्यू डिस्कशन करबा पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी का एमसीक्यू अरे रोमा रोमा फटाफट कमेंट करो प्लीज कमेंट करने वेट करो पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी का एमसीक्यू डिस्कशन करबा पूर्व पिला माने दुईटी कथा कहूची अपील करछि दुईटी कथा कहूछि ना दुईटी कथा अपील करछि पिला माने जो माने भी जॉइन करछ वीडियो टिके फटाफट लाइक करो आ फटाफट तमर जेते सब फ्रेंड्स सर्कल अछि फ्रेंड्स सर्कल में शेयर करो अरे बेटा ए 2 घंटा 3 घंटा बसी क्लास करा होची इंपोर्टेंट सेशन जेते अधिक तमे माने शेयर करबा हमको भल पाइबा दबा हमको सेते मोटिवेशन मिलिबो आ हम सेते अधिक क्लास तम पई करिब ओके ओके दिबा नेक्स्ट क्वेश्चन एतर कमेंट करो द ऑथर ऑफ द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी इज ऑथर ऑफ अ पोर्ट्रेट लेडी रो की खुशवंत सिंह आर के नारायण मनोज दास स्टीव जॉब्स किए होचंती द पोर्ट्रेट ऑफ लेडी रो ऑथर ए वेरी गुड खुशवंत सिंह होच तमरा करेक्ट आंसर द लेडी पोर्ट्रेटेड इन द स्टोरी इज ऑथर्स कौन होबो ग्रैंडमदर सिस्टर मदर डॉटर जी एथिरे पोर्ट्रेट थिला सी ऑथर पर कौन हो ए ग्रैंडमदर वेरी गुड नेक्स्ट क्वेश्चन थिला द ग्रैंडमदर इन द पोर्ट्रेट हंग on the wall looked like केमिति देखा जाउथि old thin and wrinkly young handsome well built old had a long white beard worn big turban none of the above ग्रैंडफादर कथा पचाछि ग्रैंडफादर केमिति देखा जाउथि सी old had a long white beard worn big turban होछि तमरा करेक्ट आंसर ओके grandmother looked fat slightly bent old short slightly bent fat long fat slightly bent old fat long केमिति देखा जाउथिले ग्रैंडमदर नंबर बी very good old short slightly bent fat the author's parents left him with his grandmother when he was an infant he was a child he was a young man he was a teenager the author's parents left him with his grandmother केतबेला ताको ताको ग्रैंडमदर माने छाडी जायछि okay very good when he was a child the animal grandmother used to feed in the village is को animal को खाइबा को दउथिले cats dogs cows sparrows को भली animal को खाइबा को दउथिले cat dog cow sparrows question number 6 question number 6 B okay very good dogs होछि हमरा correct answer the parents of the author were living in a foreign country other village and other state this city कोठी ऑथर को पेरेंट्स माने लिविंग करथिले टाइम कमेंट करो इन द सिटी होछि तमरा करेक्ट आंसर ओके नेक्स्ट क्वेश्चन होछि इन द टेंपल ग्रैंडमदर वाज डूइंग मेडिटेशन रीडिंग स्क्रिप्चर्स सिंगिंग रिलीजियस प्रेयर्स टीचिंग अदर किड्स रिलीजियस प्रेयर्स कोन करथिले ग्रैंडमदर टेंपल को जाई कोन करथिले 7 नंबर डी टीचिंग अदर किड्स रिलीजियस प्रेयर्स ठीक अछि रीडिंग स्क्रिप्चर्स होछि तमरा करेक्ट आंसर ओके नेक्स्ट क्वेश्चन होछि इन द सिटी दे वेंट टू स्टडी इन an english school in motor bus in a private school by walking in hindi school on scooter none of these
सिटी रे जेतबळे गले लेखक स्कूल को केमिति जिबा आसिया कले एवं को स्कूल जाइथिले प्रश्न टिकट फटाफट कमेंट करो क्वेश्चन नंबर 9 क्वेश्चन नंबर 9 ए जो माने ए कमेंट करछ ठीक अछि वेरी गुड एन इंग्लिश स्कूल इन ए मोटर बस The grandmother went to school with the author because the school was attached to the temple. She wanted to guard him to see how he was reading. None of the above. कौन पाई लेखक ग्रैंडमदर ताको सहित स्कूल को जाउथिले very good very good very good the school was attached to the temple next question thila in the courtyard of the city house grandmother used to feed grandmother कौन यूज करथिले बा फीड करिया को कौन दउथिले dogs cats sparrows cows कौन दउथिले कौन दउथिले very sparrows होची correct answer grandmother after listening the things taught in the school became unhappy because कौन पई सुनिले कौन पढ़ा दिया बोली सुनी के से unhappy है she could not help the writer with his lesson she had no interest on those topics she did not want the writer should learn english none of the above से लेखक को साका विषय रे सहायता करि परिबेनी से ताकर से टॉपिक विषय इंटरेस्ट नथिला कि से विषय गुडा को जानि नथिले बा नॉन ऑफ द एबव कौन हबो तमरो करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 12 फटाफट कमेंट करो सी डिड नॉट वांट टू राइट और शुड लर्न इंग्लिश नहीं से तो चाहूथिले से इंग्लिश पढु गई कौन पई दुख प्रकाश कले भाभी से आंसर दियो तबले जे करेक्ट आंसर आसीनी जो माने भी आंसर करछे तबले करेक्ट आंसर आसीनी फटाफट कमेंट करो फर्स्ट करेक्ट आंसर सेकंड करेक्ट आंसर असला भाग्यलक्ष्मी फर्स्ट आंसर मोनालिसा रो तापर भाग्यलक्ष्मी रो तापर सिमरन रो she could not help the writer with his lesson सेति पई से मन दुख करथिले the common link of friendship between the writer and the grandmother was suspended when the writer केते बळे ताको भितर common friendship ता भागी गला went up to university went up in a foreign trip got married none of the above जेते बळे यूनिवर्सिटी पळेले बा जेते फॉरेन ट्रिप रे पळेले जेते मैरिड हे गले बा नॉन ऑफ द अबव कोटा हबो करेक्ट क्वेश्चन नंबर 13 very good went up to university जेते बळे से यूनिवर्सिटी पळेले ताको भितर फ्रेंडशिप ता भागी गला the grandmother died peacefully telling her beds lying on the bed in the hospital while sleeping none of the above केते बळे डेथ हितेला पीसफुली शांतिपूर्ण भाव में कहि कि निज खट ऊपर सोइला बेले मरि गेले हॉस्पिटल रे मरि गेले जेतबे सोइथिले मरि गेले नॉन ऑफ द एबव क्वेश्चन नंबर 13 ना आंसर होची पीसफुली टेलिंग हर बेड्स लाइंग ऑन द बेड ओके नेक्स्ट क्वेश्चन थिला व्हाई डिड द ग्रैंडमदर कीप वन हैंड ऑन हर वेस्ट टू पिक अप थिंग्स इजीली टू बैलेंस हर स्टूप टू करेक्ट हर पोस्चर टू मेक हिम हरसेल्फ स्ट्रेट ग्रैंडमदर कोन पई निज अंटा ऊपर गोटे हाथ दउथि कोन पई निज अंटा ऊपर गोटे हाथ दउथिले कोन पई दउथिले बी वेरी गुड टू बैलेंस हर स्टूड एटा स्टूप है जेटा स्टूड हम ओके the narrator had known his grandmother to be old man and wrinkled for dash 10 years 30 years 20 years 25 years केते वर्ष over wrinkled आसी जे ताको मुहरे बोली जानथिले राइटर क्वेश्चन नंबर 16 very good C होची करेक्ट आंसर for 20 years the portrait of a grandfather was hanging in the drawing room storeroom bedroom kitchen the portrait of a grandfather was hanging in कोठी hang हेतिला drawing room storeroom bedroom kitchen कोठी hang हेतिला फोटो very good in the drawing room what did the author eat for breakfast some rice and corn a thick bread with butter some apples and bread
A thick stale chapati with a little butter and sugar spread on it. कौन ब्रेकफास्ट रे खाउथिले राइट? क्वेश्चन नंबर 18 ए नो भाग्यलक्ष्मी भूल कहला राइस कोड खाउथिले. D very good. A thick stale chapati with a little butter and sugar spread on it. The author treated the stories of grandmother's youth and beauty as poetry, fables, drama, novel. Grandmother beauty को से केमिति बेली भाबुतले? Poetry, fables, drama, novel. 19C drama, no. B fables होची तमरा correct answer. Question number 20 थिला how did the grandmother spend her afternoon every day? By feeding hundreds of sparrows, by taking nap, by talking to author's mother, by going to temple. केमिति निज चारिटा बेला समय आ अपराह्न समय बिताउथिले? Question number 20 A. By feeding hundreds of sparrows. What change came in the grandmother evening time? She slept early, she went for a walk, she collected the women of the neighborhood, she talked with the author's parents. कौन changing देखा गला संध्या समय grandmother को पाखरी? कौन changes देखा गला? कौन changes देखा गला से सोई पड़िले एली से बुलिबा को संध्या रे गले कि सब नेबरहुड रो वुमेन्स मान को डाकी बसी कथा हेले बा ऑथर को पेरेंट्स सहित कथा कौन देखला? C very good. She collected the women of the neighborhood. Next question tela how did the grandmother spend her time in city? By spinning the wheel, by reading the scriptures, by feeding dogs, by taking to neighbors. एमिति grandmother city रे निजर समय अतिबाहित करथिले बा करथिले? By spinning wheel, by चरक पटवा, reading scripture, feeding dogs, taking to the neighbors. एमिति समय अतिबाहित करथिले. Very good. By spinning wheel, by जोटा कोए orator. What did the village priest teach the student? Scriptures, alphabet and the morning prayers, moral lesson, science. Village ro priest बा ब्राह्मण कोन पढाउथिले पिला मानकु? Scriptures, alphabet and morning prayer, moral lesson, science. कोन पढाउथिले? 23 फटाफट. Okay, very good. Alphabet and morning prayer la correct answer. What is the meaning of the word chorus? Chorus ro mane kon? Individually, in a group, between two people, working hard. Chorus ro mane कहले तमे कोन बुझो? Chorus. Chorus mane bile दलगत भाबरे. बुझिलो? ताले कोन हबो ना in a group. Question number 25 tela what was the grandmother doing inside the temple when the author was studying in the temple veranda? जेतबेले टेम्पल रो veranda रे author पढुथिले सेतबेले grandmother मंदिर भितर कोन करथिले? Reading scriptures, listening to the prayers, singing prayers, performing puja. कोन करथिले grandmother सेतबेले? Very good, very good. Reading scriptures होछि तमरा correct answer. Okay. जिबा next question की. Next question तला question number 26. Who would meet the author and his grandmother at the temple door? काहा को टेम्पल डोर पाखरे ग्रैंडमदर और ऑथर भेटुथिले? स्पैरो, विलेज मंकी, विलेज डॉग्स, विलेज बेगर्स. काहा को मंदिर द्वार मरे देखुथिले? 26C very good. Village dogs होछि तमरा करेक्ट आंसर. What was the turning point in the relationship of the author and his grandmother? The grandmother's death, the marriage of the author, the separation of the author from his grandmother, they are shifting from the village to city. कोटा ताको रिलेशनशिप author और grandmother रो रिलेशनशिप रे कोटा टर्निंग पॉइंट आसीला बा कोटा परिवर्तन आनिला? चारटी ऑप्शन जो देइछि ताको कोटा को उत्तर. Very good, very good. They are shifting from the village to city which is correct answer. Okay. What did the grandmother do in her leisure time in the city? City रे जो leisure time means कोन? फांका समय रे कोन करथिले? Sang prayers, read scriptures, feed sparrows, fed pigeons. काहा को खाइबा करथिले? Pigeon की sparrow की prayers करथिले कि scriptures करथिले? फांका समय रे से कोन करथिले? C. Fed the sparrows.
What was or were not taught to the author at the English school? English school रे author को कौन पढ़िया गला नाही पचासी कौन पढ़िया गला नाही Western science, English words, the scriptures, music lesson कौन पढ़िया गला नाही पचासी क्वेश्चन टाको ध्यान सहकारे देखि आंसर कौन पढ़िया गला नाही कौन पढ़िया गला नहीं ध्यान से देखि उत्तर दियो ट्वेंटी नाइन ए इंग्लिश वर्ड्स अच्छा सी डी कौन पढ़िया गला नहीं ए वेरी गुड वेरी गुड ए जो मैंने कमेंट करछो से माने उत्तर ठीक अछि इंग्लिश वर्ड्स Why was the grandmother distressed with the teaching in the English school? There was much emphasis on alphabets. There were no lesson on God and the scripture due to teaching of music, due to teaching of science. कौन पाई grandmother distressed थे teaching of English school ऊपर कौन पाई थे very good Simran very good जो मैंने कुछ there were no lessons on the God and the scripture सेटा होची करेक्ट आंसर गोटे मिनिट पहले एटार आंसर द स्क्रिप्चर्स हो ओके एटार आंसर द स्क्रिप्चर्स हो क्वेश्चन नंबर 29 एटा टिके मार्क करनियो क्वेश्चन आंसर द स्क्रिप्चर्स हो क्वेश्चन नंबर 31 थिला his voice dropped to a whisper pick out the correct dictionary meaning of the underlined word पहले एटा ଗୋଟେ important जिंस आसले ଗୋଟେ डिक्शनरी स्किल जोटा कि तमर 5 मार्क अछि सेटा कहला पहले एटी 11टा कहा तळे अछि ना वर्ड ड्रॉप तळे अछि को वर्ड तळे अछि ना ड्रॉप तळे 11टा अछि ओके पहले से कहि छि एई जो वाक्य रे ड्रॉप शब्दटा यूज हेछि तार अर्थ कोन टू फॉल टू गो डाउन टू बिकम वीकर ए रिडक्शन एथिरे जो वाक्य रे ड्रॉप टा यूजर हेछि तार हिज वॉइस ड्रॉप टू व्हिस्पर तार जो वॉइस थिला ड्रॉप टू व्हिस्पर माने गुणु शब्द रे कोन हैला परिणत हैला ताले कोन हबो टू फॉल टू गो डाउन टू बिकम वीकर ए रिडक्शन फटाफट कमेंट करो एटी अर्थटा कोन हबो 31 सी वेरी गुड टू बिकम वेकर पिले बुझी परिला टू बिकम वेकर पिले कोन देइथबो ना पांचटा धाडी देइ देइथबो डिक्शनरी स्किल रे पांचटा धाडी रे देखिबो गोटिए वर्ड कॉमन थिबो तार पांचटा धाडी रे पांचटा मीनिंग हेइथबो सेपटे मीनिंग देइथबो तमु कहइथबो डिक्शनरी स्किल करो कोन करबो ना जो धाडी रो सहित जो मीनिंग ता समान सेइथबो देइथबो एठी आमे जो क्वेश्चन अछि रे एक्सरसाइज रे देखिथिली ड्रॉप को नेकी अछि वहां को नेकी ना ड्रॉप को नेकी क्वेश्चन अछि एनो के ध्यान दे नेक्स्ट क्वेश्चन दिला व्हाट वाज द ओपिनियन ऑफ द ग्रैंडमदर अबाउट music classes music had a soothing effect music had a word association music was essential for overall development music संपर्क रे ग्रैंडमदर कोन मतामत थिला कोन मतामत थिला सी very good music had a layered association what did the grandmother act with resignation separation from the authors separation from the family members or ill health or old age काहाटा को से एक्सेप्ट करे 33 कमेंट करो 32 सलानी 32 सी हो वेरी गुड केमिति आंसर प्रेजेंट करिवो तार गोटे वीडियो सेटा करेक्ट आंसर how did the grandmother relax in the afternoon by singing songs by reciting prayers by spinning the wheel by feeding the sparrows केमिति ताका आफ्टरनून समय को रिलैक्स करथिले 34 कोन अब कमेंट करो 34 फटाफट कमेंट करो 34 डी by feeding the sparrows होचे हमर करेक्ट आंसर which was the happiest half hour of the day for the time spent with temple this time spent with the neighbor the time spent with the sparrow this time spent with the author कोटा तकर happiest time थिला जो half hour भितर कोटा थिला the time spent with the sparrows very good
ओके दिबा नेक्स्ट क्वेश्चन को ओटा कि 36 व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस एट हर एज वन नेवर टेल ये जो वाक्यटा रहिला एट हर एज सही समय रे केही भी कहिबे नै ये वाक्यर अर्थ पचारची शी वाज वेरी वेल शी डिड नॉट ईट मच शी डिड नॉट बिहेव प्रॉपर्ली शी वाज so old that she could die at any moment ये वाक्यर अर्थटा कोन पचारची वेरी गुड सिमरन वेरी गुड ये वाक्यर अर्थ होची से बहुत अत्यधिक वृद्धावस्था परिणत हेतिले से कोनोसी भी मोमेंट रे मृत्युवरण करि पारत ओके नेक्स्ट क्वेश्चन तरा क्वेश्चन नंबर 37 चूज एन एप्रोप्रिएट वर्ड फॉर द वर्ड फ्रॉम द फॉलोइंग सेंटिमेंटल वर्ड रो अर्थ कोटा हैप्पी जॉयफुल इमोशनल मॉर्नफुल सेंटिमेंटल रो अर्थ पले तमर वोकाबुलरी अछि 5 मार्क सेंटिमेंटल रो अर्थ कोन वेरी गुड इमोशनल होची करेक्ट आंसर while going aboard what did the author cherish most imprint love of his family care of his mother affection of his grandmother's kiss on his forehead कहा को अधिक छथि मोस्ट इम्प्रिंट रे D his grandmother's kiss on his forehead when did the author come back after home after 4 years 5 years 6 years 2 years केते वर्ष परे फेरिले 4 5 6 2 केते वर्ष परे निज घर को फेरचंती केते वर्ष परे फेरचंती कमेंट स्लो हे जाउछ को पई धीरे धीरे बहुत कमेंट करो फटाफट कमेंट करो 39 डी बी असला वेरी गुड आफ्टर 5 इयर्स होज हमर करेक्ट आंसर ओके इवन नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज द सिनोनिम वर्ड फ्रिवोलस रो सिनोनिम वर्ड कोन केयरफ्री सीरियस फनी मिस्ट्रियस सिनोनिम माने या अर्थ जा अर्थ से कोन हबो सिनोनिम वर्ड क्वेश्चन नंबर 41 वेरी गुड केयरफ्री What is the meaning of the word rebuke? Rebuke ro mane kono? To hang, to scold lightly, to pray for mercy, to learn something. Rebuke ro mane kono? Rebuke ro mane kono? Very good. To scold lightly. What change came over the author's grandmother in evening? She did not pray. She started dancing wildly. She collected drums from the neighborhood all of the above संध्यार तांका भितर कोन परिवर्तन देखागला से प्रार्थना कलेनी से नाचिबा को लागिले वाइल्डली हिंस्र भाबरे ड्रम्स एंड नेबर्स एंड ऑल ऑफ द above कोन हैला तांकर आंसर 42 वेरी गुड ए प्रयास डी नो ए she did not pray Question number 43 थिला What did the grandmother sing of the collecting the women of the neighborhood for prayers, homecoming of warriors, reception song for the author, scriptures? Grandmother collect करी women मान को कौन बोलुतली? Prayer, homecoming of the warriors, reception song for the author, scriptures. 43 Very good. Homecoming of the warriors. Pile eta te dhyan deita beta very important. What happened the next morning? The grandmother became unconscious. The grandmother lost her scene. The grandmother was taken ill. The grandmother started to steal. Next morning re kon hela? 44. Very good. The grandmother was taken ill. Next question thala what did the grandmother tell all the family members to call the doctor to bring her holy books to bring her a new rosary that her end was near se taka family members को कौन कहतिले कि that her end was near मो मृत्यु पाखे आसिला बोली से कहतिले ओके why did the he was not going to talk to anyone se kaha se to katha barta karibe na boli kon pai कहतिले because she cannot speak because she wanted to pray because she wanted to die peacefully because she wanted to talk with the angels kon pai मना करथिले कि मु काहा सहित कथा वार्ता करिबि नाही
क्वेश्चन नंबर 46 थिला कौन पे मना करथले बिकॉज़ शी वांटेड टू प्रे ओके क्वेश्चन नंबर 47 थिला हाउ डिड दे नो दैट शी was dead she closed her eyes the rosary fell from her fingers the doctor declared her dead her last prayer was said loudly केमिति जणा पड़ला कि से मृत्युवरण करिसंती बोली केमिति जणा पड़ला very good the rosary fell from her hands हला करेक्ट आंसर the fingers what was the custom regarding dead people to cover the dead body with a red shower to cover the dead body with a white shower to cover the dead body with a black skirt to keep the dead body uncovered कोनटा रिचुअल्स अछि डेड बॉडी सहित करा जाय फटाफट कमेंट करो एटा तो पिला बहुत इजी पेरियो समस्या फटी कोन अछि रिचुअल्स करा जाय डेड बॉडी सहित धड़ा कपड़ा पका जाए कि कला कपड़ा पका जाए कि नाली कपड़ा पका जाए ना किछि घोड़िया जाए कोन करा जाए बी जो माने लिखुछ व्हाइट पिले सेटा आम कल्चर रे व्हाइट बट राइटर का कल्चर व्हाइट करा जाए नाही जे तो राइटर जने सिख संप्रदाय रे लोक थिले ए वेरी टू कवर द डेड बॉडी विथ ए रेड शॉट why did the family members stop halfway in the courtyard as there were 100 of ants as there were thousands of sparrows as there were thousands of monkeys as there was 100 of dogs कोन पे फैमिली मेंबर्स हाफवे रे कोटिया रे छिड़ाले कोन पे सेठी बहुत सारा पिपुड़ी थिले बहुत सारा स्पैरो बा घर चटिया थिले बहुत सारा माकड़ थिले बा बहुत सारा कुकुर थिले कोन पे छिड़ाले सर प्रणाम हां प्रणाम 49b as there were thousands of sparrows why did the sparrows not take notice of the bread crumbs lying on the floor कोन पे जो ब्रेड रो गुंडा पड़िथिला ताको नउ नथिले they never ate bread crumbs the bread crumbs were stale they were also mourning the death of grandmother they had come to eat chapati se chapati खाय बसथिले बा देला से ग्रैंडमदर मॉर्निंग रे दुखरे थिले crumbs were stale बा crumbs of bread से आगुरी केबे ब्रेड खाइ नथिले कोन पे ई करथिले very good कार्तिकेश्वर जान they were also mourning the death of a grandmother okay ये थिला तमरा प्रथम 50 क्वेश्चन ओके एबिला नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51 पिले पूर्वरु गोटे करिथेली जो डिक्शनरी स्किल रो गोटे क्वेश्चन ता थिरे तुमको गोटे ड्रॉप देइथिला से ड्रॉप रो मीनिंग कोन देइथिले एबे देखो ए वाक्य रे मध्ये गोटे ड्रॉप अछि देखो ए वाक्य रे मध्ये गोटे ड्रॉप अछि बट यार मीनिंग अलग हबो द बॉटल ड्रॉप्ड and they broke to pieces यार अर्थ कोन to fall to go down to become weaker to slip away ए अर्थ कोन हो फटाफट कमेंट करो बोतल टी हातरू drop and broke into pieces माने पड़ी गला एवं भांगी गला तार आंसर कोन बना to fall सेठी अर्थ अलग होतिला सेठी होतला कोन to become weaker एठी हला to tall पिले गोटिए शब्द भिन्न भिन्न जगह रे व्यवहार होबो भिन्न the bottle dropped and broke into pieces कमेंट करछो डी बोली बोधवे नै डिलीट कर दला फटफट कमेंट ओके ठीक है टू फॉल हैला सेही अनुसार नजर करिवो सेठी देखो ए पुणी गोटा ड्रॉप देला ड्रॉप मी ए पोस्ट कार्ड व्हेन यू गेट देयर तमे जते बेले सेठी पहुंच जिवो मते गोटे पोस्ट कार्ड पठेइबो टू फॉल टू गो डाउन टू सेंड लेटर टू सेंड अवे एठी ड्रॉप माने कोन सेंड लेटर तमे जते स्थिति पहुंच जियो मते गोटे चिट्ठी पठेइबो सेम वर्ड टा होचे ड्रॉप किंतु भिन्न सेंटेंस रे तार मत भिन्न हेवी रेन कैन कॉज ए ड्रॉप इन टेंपरेचर एठी ड्रॉप माने कोन ए रिडक्शन टू फॉल टू बिकम वीकर टू स्लीप अवे गोटे मेघ कोन करे तापमात्रा रे कम करि पारे कोन कम करिया माने कोन रिडक्शन तो करेक्ट आंसर हो ए रिडक्शन से समान जिनिस बट भिन्न वाक्य रे भिन्न मीनिंग किंतु पिले यार लिखिबार फॉर्मेट होची इंपोर्टेंट जदि लिखिबा फॉर्मेट ठीक रहिबो नै ताले हमर मार्क मिलिबो नाही डिक्शनरी स्किल तमे ठीक लिखितला मध्ये ओके केमिति लिखिबो सेटा जानिबार अछि जदि WhatsApp ग्रुप रे जॉइन कर जा लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स रे देछि सेठी मु आज तुमको गोटे फॉर्मेट रो लेखि के पठेइ देबी डिक्शनरी स्किल केमिति लिखा जाय ओके few drops of tear don't wash out science
few drops of tears किछि बुंदा लुह don't wash out signs ए कोन हबो shedding tears a small round mass of liquid repellents liquid substance drop माने कोन ना गोटे बुंदा लुह by a small round mass of liquids एटा होची तमरा करेक्ट आंसर सेम वर्ड सेम नुह अलग लाइन रे सेम मीनिंग न करी अलग अलग मीनिंग शो करछि it had to believe for the writer पुणी आसले हरि तम टेक्स्ट को it was hard to believe for the writer that his grandmother was once married his grandmother had many children his grandmother had a happy family life that his grandmother has once been young and pretty and even had a husband लेखक कौन विश्वास करू नथिले कौन विश्वास करू नथिले फटाफट कमेंट कर कौन विश्वास करू नथिले कि ताको ग्रैंडमदर सेतबेले कौन डी ता ग्रैंडमदर सेतबेले गोटे हैप्पी फैमिली व्हाट वाज हॉन्ग mental piece in the drawing room the writer's grandfather's photo the writer's grandmother's portrait the writer's family photograph the photograph of the golden temple कोन टंगा जाइथिला एवं mental piece in the drawing room कोन टंगा जाइथिला कोन टंगा जाइथिला grandfather's रो portrait रो गोटे फोटो टंगा जाइथिला very good the best part of the writer's grandfather's was covered in his white beard his black beard his long white beard his trimmed black beard लेखक ग्रैंडफादर का छातीटा कोउतरे घोड़े ही थिला ब्लैक बियर्ड व्हाइट बियर्ड व्हाइट बियर्ड देखो पहले दीटा ऑप्शन अछि गोटे व्हाइट बियर्ड अछि गोटे व्हाइट लॉन्ग बियर्ड अछि आ गोटे रहला ट्रिम्ड ब्लैक बियर्ड गोटे रहला ब्लैक बियर्ड तो बाक्सिकरी आंसर जे कोनटा करेक्ट आंसर वेरी गुड हिज लॉन्ग व्हाइट बियर्ड होछि तमरा करेक्ट आंसर which thought was almost revolting to the writer thought of a grandmother being generous the thought of a grandmother being a good housewife the thought of a grandmother being once young the thought of a grandmother being husband and a father which thought almost revolting the writer कोटा revolting करथिला कोटा रिवोल्टिंग करथिला 58 सी ना बेटा सी हबनी भूल कहलो okay very good b option होची करेक्ट आंसर द थॉट ऑफ ग्रैंडमदर बीइंग ए गुड हाउसवाइफ प्ले ओटा भलो जिंस कहि रखुची एबे रिसेंट मो सहित दुई थरा घटिलानी प्ले आज तुम मानक फोन को हठात गोटे प्रकार मेसेज आसी पारे जोटे की साउंड करिकरी माने गोटे वाइब्रेशन क्रिएट करे बुझिलो तो सेति भाई कोनसी पिला भयभीत होबनी कारण गवर्नमेंट तरफ गोटे डिजास्टर रो गोटे न्यू प्रोटोकॉल आज पालन करा जाउची कि जत्ता बेले भी भूमिकंप हो बात्या हो बन्या आसीबो हठात माने जोटे सडन किछि गोटे घटिले सडन मेसेज हो सेटा गोटे अबागिया साउंड करिकरी हठात फोनटा वाइब्रेट होची होची सते जेम जोटे ब्लास्ट करिवो जे कहबो फोनटा हैक हे गेला ए बळी होची तो सेति भाई के भयभीत होबो नाही ओके what seemed quite absurd and undignified for the writer's grandmother's love and attachment for her husband grandmother's scared performance grandmother's account of the games she used to play as a child grandmother's hard work for a large family कोटा for थला राइटर को पई ग्रैंडमदर हिसाब फटाफट कमेंट करो 59 C sir again check 58 number please sir the thought of grandmother being good house ठीक है तो 59 C very good grandmother's account of the games she used to play as a child question number 60 thila how did the writer treat his grandmother's account of playing games as a child as the fables of the prophets
as the fairy tales, as the ceremonies of the sex saints, as the tales of the Arabian Nights. कहा सहित तुलना करा जाय अछि। Very good. As the fables of the prophets. The writer's grandmother looked as a live skeleton, terrible old, a goddess, a religious oaf. कहा पली writer's grandmother देखा जाऊ थिले। Live skeleton, terrible old, a goddess, a religious oaf. फटाफट कमेंट करो 61B. Very good, very good, very good. Terrible old. Question number 62 थिला, his grandmother was often found telling the beads of her rosary, murmuring something silently, doing some work, engaged in religious activities. Grandmother often found कौन करथिबार से सदाबेले देखिचंती निज ग्रैंडमदर को, कौन देखिचंती निज ग्रैंडमदर को। 62 नो 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 बी नो बेटा बी नो ए। वेरी गुड। Telling the beads of her rosary, the writer's grandmother was like the winter landscape in the mountains. What does the quote explain? Was like the winter landscape in the mountains. यार माने कौन? It means calm and a peaceful state of mind. It means seriousness of mind. It means a state of loneliness. It means a observed psychological condition. এই এক্সপ্রেশনর মানেটা কোন? was like the winter landscape in the mountains. এই এক্সপ্রেশনর মানেটা কোন? फटाफट कमेंट करो। वेरी गुड, वेरी गुड। ए जो माने कमेंट करछो, इट मींस calm and peaceful state of the mind. वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन थिला, they were good friends. who were they? एठी जो कहे जे से माने बहुत भलो सांग थिले, से दे माने के? द राइटर एंड हिज फादर, द राइटर एंड हिज ग्रैंडमदर, द राइटर एंड हिज सिस्टर, बा द राइटर एंड हिज मदर। वेरी गुड, द राइटर एंड हिज ग्रैंडमदर। नेक्स्ट क्वेश्चन थिला, when did the writer's grandmother say her morning prayer in a monotonous singing song? When going to the temple, when going her menical work, when accompanying the writer to school, when the bathed and dressed in the writer. केतबेले मोनोटोसली मॉर्निंग प्रेयर सिंग करूथिले? केतबेले? 65 डी प्रयास ठीक अछि। सी नो भूल अछि। गायत्री डी ठीक अछि। श्वेता कहला डी ठीक अछि। वेरी गुड। When she bathed and dressed in the writer. The writer's grandmother said her morning prayer before the writer, hoping that would make the writer happy. In the writer would listen and get to know it by heart. It would her own satisfaction. It would make her family happy. 66B. B. Very good, Gayatri. Simran ठीक अछि। Very good, very good. In the writer would listen and get to know by it heart. What were the things that the writer would carry with him to school? A plastic bag containing a notebook and a pencil and ink pot, a wooden slate, a tin earthen ink pot and a red pen, a slate and some pieces of paper for writing, a book, a pen, some pieces of paper for writing purpose. कौन निज लेखक निज बैग रे नेकी स्कूल को जाउथिले? कौन नेकी जाउथिले? फटाफट कमेंट करो। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। A wooden slate, a tin earthen ink pot and a red pen. Very good. What would the village dogs do when the writer and his grandmother return to home? जेताबेले राइटर आ ताको ग्रैंडमदर विलेज रु होम को बैक करथिले, से कोन करथिले? द विलेज डॉग वुड फॉलो देम, ताको फॉलो करथिले। द विलेज डॉग्स वुड फॉलो देम ग्रोइंग and fighting with each other for chapati. They threw up to them. The village dogs would stand in front of them. The village dogs would run past up the speed. कोन करथिले विलेज डॉग्स माने जेताबेले लेखक एवं ता ग्रैंडमदर घर को फेरथिले? कोन करथिले? Very good, very good. The village dogs would follow them, growing and fighting with each other for the chapatis they threw them.
Question number 69 thala, what was the turning point in the friendship between the writer and his grandmother? A question ta already discussion sorry. Turning point कोटा thila? When the writer went to the city leaving grandmother in the village, when the writer parents sent for them, when she become more religious, when the writer's grandmother took spinning for the whole day. केतबेले ताका रिलेशनशिप भितरे गोटे बंध बा बांधक सृष्टि हैला केतबेले सृष्टि हैला केतबेले हैला ए very good. When the writer went to city leaving grandmother in the village. Next tell why did the writer's grandmother do not go to school with the writer? कौन पे गले नहीं? She was very weak to accompany him. The writer's father did not allow her to go to school. The writer went to an English school in a school bus. The school bus was far away from their residence. कौन पे से लेखक सहित आ विद्यालय को गले नहीं? कौन पे गले नहीं? ना लेखक गोटे इंग्लिश मीडियम स्कूल रे पढिले एवं से गोटे बस रे यातायात कला है तो से ताको छाड़ीबा को गले नहीं. Did the writer's grandmother feed the dog city house as she used to do in the village? जेमति से गां रे कुकुर मान को खाइबा को दोतिले शहर रे सेमति देले की? No, she did not feed dogs in the city. Yes, she fed the dogs in the city. No, she was not allowed to do so. No, she had no interest feeding them. ताकर इंटरेस्ट नथिला से देले नहीं खाइबा को पूरा मानकू कि ताकू दबा पई तकर जो पुओ आ बहु थिले परमिशन देले नहीं बा ताकू दउथिले कुकुर मान कोनटा ताकर करेक्ट आंसर हो तिले परमिशन मिली नथिला ताकू सेति पई से दउ नथिले नहो सेटा हबो शी डिड नॉट फीड डॉग्स इन सेमति परमिशन मिली नथिला बोली कोनोसी भी वाक्य रे लिखि नै त कोइ जगह कुछ परमिशन मिली नथिला से माने कोनस भी नाही ओके Whom did the writer's grandmother took to feeding in the courtyard in the city house? Courtyard रे कहा को खाइबा को दउथिले? She fed cats in the courtyards, fed bulls in the courtyards, fed crows in the courtyards, sparrows in the courtyards. अगण रे कहा को खाइबा को दउथिले? Very good, very good. She fed sparrows in the courtyards. Why was the grandmother distressed? There was no teaching about God and scriptures in English school. There were no teaching about culture. The teaching were only in English school. The teaching were based on foreign culture, not on Indian culture in English. कौन पाई से dissatisfied थिले बा distressed थिले English medium पढ़ा उपरे कारण सेथिरे किछि भगवान आ ताको कल्चर बा स्क्रिप्चर्स विषय किछि पढ़ा जिनिस नथिला ओके नेक्स्ट युवा क्वेश्चन नंबर 74 which thought made the grandmother very much disturbed her grandson future would not be bright her grandson learning of a music lesson her inability to take care of her grandson the feeling being old and lonely कोटा हबो करेक्ट आंसर भाबी चिंती आंसर दे एटा बढ़िया क्वेश्चन डाकिले विषयटा बहुत भलो विषय बी her grandson's learnings of a music lesson next question thila why was the grandmother disturbed about music lesson taught at the English school because music lesson harmful effects because music lesson would destroy her grandson's bright career because music lesson had lewd association and they were meant for harlots and beggars not for the gentle folk because she feared that her grandson might go on a wrong path what answer 79 75 रे बेटा 76 की ओटा ऑप्शन रो आंसर कमेंट कलानी 75 रो कमेंट करो 75 C very good because music lesson had lewd association and harlots and beggars for the very good whose chirping made the grandmother happy in the city house parrots sparrows flying over the house pigeon काहार शब्द grandmother को happy करूथिला काहार शब्द sparrows मानकर शब्द in the courtyards how did grandmother question number 75 पर question number ओहो एटी बहुत सारा क्वेश्चन कटि जाई रे 76 78 78 79 कटि जाई डायरेक्ट आसीगला तमर क्वेश्चन नंबर 80
How did his grandmother celebrate the writer's return? She went to the village temple and worshiped God. She stopped praying, collected women of the neighborhood, and started singing the homecoming of the warriors for several hours, playing the old dilapidated drum. She disturbed the sweets and cakes among the children of the village. She celebrated his return with a grand party. केमिति ताको नाती घर को फेरिथिला बेली सेलिब्रेट करथिले? क्वेश्चन नंबर 80 केमिति सेलिब्रेट करथिले? केमिति करथिले? 80B वेरी गुड जो माने बी ऑप्शन कमेंट करछो समान का आंसर होची करेक्ट आंसर ओके से पाख स्त्री लोक मान को डाकी करी करथिले अरे पिले अच्छी क्वेश्चन नंबर 77 अच्छी व्हाट वाज द लास्ट फिजिकल कांटेक्ट बिटवीन द राइटर एंड हिज ग्रैंडमदर अकॉर्डिंग टू द राइटर्स थिंकिंग his grandmother close loving embrace his grandmother's putting hand on his head the writers are touching of his grandmother's feet and her embrace his grandmother's kisses on her head what about 77 पिले करेक्ट आंसर of his grandmother's kisses on his forehead 78 थिला what remark did the writer give on his grandmother's physical condition his grandmother looked terrible old his grandmother could not utter words fluently his grandmother did not look a day older his grandmother was walking with less difficulty very good his grandmother did not look a day older last question what were the happiest moments of his grandmother on the first day of his arrival speaking to her grandson for a long time feeding the sparrows longer with fabulous books, worshipping God and reciting prayers and telling her verse. Last question. फटाफट कमेंट कर दियो. Very good. Feeding the sparrows longer with fabulous books. Okay. पिला माने आजिरो क्लास 8 ही एंड ऑफ करिबा आजिरो क्लास रे हमें दुईटी चैप्टर जोटा कि तमर थिला ऑन एग्जामिनेशन ता सहित दी पोर्ट्रेट ऑफ लेडी यार सब जाक गुरुत्वपूर्ण एमसीक्यू डिस्कशन कर देले ता सहित तमर जो थिला डिक्शनरी स्किल सेटा मध्ये डिस्कशन कर देले बाकी वीडियो टी को समस्त लाइक करनियो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब करनियो और जते सब फ्रेंड्स अछंती सेमान को सहित शेयर करनियो कारण एतरो ही क्वेश्चन आसीबो एटा मु तुमको गारंटी दोची ओडिया पेपर तमे देखि सारिचो सेमती तमे आम ऊपर भरोसा रखो एवं आम सहित पढ़ी चलो लास्ट बायोलॉजी पेपर सरिया भितर आमे तुमको गोटे गुड मार्क पई तुमको ऑलरेडी प्रिपरेशन कर देथिबु ओके आज पई एतिकी रहिलु टाटा टेक केयर बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्जाम्स थैंक्स